Okay, good afternoon, student. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Anyone remember? Okay, Second 16 theorem, sir. very good, very good. Inside unit step function. Yes, unit step function and second shifting theorem. Okay, we discussed the Laplace transform of special function. Okay, so in this topic we are going to discuss two special function. First one is the unit step function and second one is the unit impulse function. Okay, so we already talk about the unit step function, Heaviside unit step function and its Laplace transform, and we also discussed the second shifting theorem for the unit step function. Yes or no, everybody? Yes, sir. Now today we are going to discuss about the unit impulse function, Dirac delta function. Okay, so you can see we discussed these things, Heaviside unit step function in the last lecture, and we also discussed the second shifting theorem and its example also. Now today we are going to discuss about the unit impulse function, or there is another name which is the Dirac delta function. Okay, so both are the same. So you can see here, for any positive number a, the Dirac delta function or unit impulse function is denoted by delta epsilon t minus a, and defined as delta epsilon t minus a is equal to 0 when t less than a, 1 upon epsilon when a less or equal to t less or equal to a plus epsilon, and 0 t greater than a plus epsilon. Here epsilon is a very small number. Very small means nearer to that one. Okay, so you can see how we can define this function graphically. So if you see here, t less than a, suppose this is my a. Okay, I say this is my a, and this one is a plus delta epsilon. Okay, so you have, when t less than a, then function will be, function is our delta epsilon t minus a, and this is your t, this is t. Okay, so if you go with that, then this is your zero part, है ना, when less than a वाला केस यहीं पे आएगा, है ना, and when a less than equal to t less than equal to a plus epsilon, then 1 upon epsilon. So you can see 1 upon epsilon is here. Okay, this is your 1 upon epsilon. So 1 upon epsilon पे a to a plus delta के लिए इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा आपको लाइन. Okay, and then t greater than a plus epsilon के लिए 0. So again next one is the 0. So this is your second one. So this is the graphical representation of the Dirac delta function or unit impulse function. So is it okay, everybody? सर Yes, yes. कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा? Sorry? ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस? नहीं, ये क्या है, ब्रेक है ना, पीस वाइज कंटिन्यूस है पार्ट. यस सर. ओके, पीस वाइज कंटिन्यूस है, क्योंकि आपने देखो यहाँ a लेस देन के लिए 0 पे हो रहा है वो पूरा, आप चाहे नेगेटिव साइड जो जाओ तो ऊपर भी वो 0 ही रहेगा. ओके, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन तक जाएगा, एंड फिर यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन, दैट मींस 0 चला जाएगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पार्ट, कि एप्सिलॉन वेरी स्मॉल. सो इफ यू टेक एप्सिलॉन टेंड्स टू इंफिनिटी, देन व्हाट वी गेट, 1 अपॉन एप्सिलॉन विल बी टेंड्स टू 0. 0. Okay, that means whenever you see the epsilon tends to infinity, then it becomes lower to or fit on the t-axis itself. That means function will be 0 always. Understand? यस सर. Okay, so this is the piecewise continuous. Okay, now when we already talk about the Laplace transform of unit step function, similarly we can find out the Laplace transform of Dirac delta function, that is the L delta t minus a is equal to e raised to minus as. Okay, अब यहाँ पे एप्सिलॉन को उन्होंने क्या ले लिया है, एप्सिलॉन टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 upon epsilon tends to 0. So here we can remove epsilon because epsilon is very small. So here the notation of the Dirac delta function is delta epsilon to delta हो जाएगा. Okay, so Laplace transform of delta
t माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस हो जाएगा। हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू टी माइनस ए क्या था, किसी को याद है? व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन? सर e raised to minus as upon s. Very good. Okay, e raised to minus as upon s. But same way here there is no s. Okay, that is the Laplace transform of Dirac delta function. Now is it okay, everybody? Yes, sir. Okay, so there is a change in ut minus a and u delta t minus a. Okay, so this is known as the Dirac delta and this is known as the unit step function. Now we go for the last example. Find the general solution of a differential equation d square y by dt square plus y is equal to delta t minus 3. So how to solve this differential equation using Laplace transform? Anybody? किससे solve करते थे हम? How many steps to solve this one? 4 steps? Yes or no? Yes. Yes. Okay. First we apply the Laplace transform both sides. Then convert that equation into y bar s is equal to something. Then step number 3 is apply inverse Laplace transform. And step number 4 is find out y of t. Yes or no? Yes, sir. Okay. So we start. Yes, sir. Yes. So here d square y by dt square plus y is equal to delta t minus 3. Now apply Laplace transform both sides. So we have Laplace transform d square y by dt square plus Laplace transform y is equal to Laplace transform delta t minus 3. Okay. So now what is the definition of Laplace transform d square y by dt square? Anybody? Yes. S square Laplace transform y of t minus s y of 0 minus y dash 0. Yes, very good. And this one is Laplace transform of y of t itself. Now tell me what is the Laplace transform of Dirac delta function? What is it? Anybody? E raised to E minus raised to 3s. minus as. Yes, delta t minus a. Laplace transform of delta t minus a will be e raised to minus s. But our a is here 3, है ना? So e raised to minus 3s. Okay, everybody understand? Yes. Okay. Now tell me what is the value of y of 0? Given y of 0 is equal to 0. 0 and y dash 0 1. 1. Okay, so we replace that also. And Laplace transform y of t, उसको क्या बोलते थे हम? Y bar s. Y bar s. Very good. Okay, so you remember it. Very good. Thank you. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? S square y bar s. This one is 0 minus 1 plus y bar s is equal to e raised to minus 3s. Okay. Now our step number 2 is converting into y bar s is equal to something. So s square plus 1 into y bar s is equal to e raised to minus 3s plus 1. Okay. Now move this s square plus 1 into the right side. So y bar s is equal to e raised to minus 3s divided by s square plus 1 plus 1 upon s square plus 1. So is there any doubt in step number 2? Step number 2 में किसी को doubt है? Anybody? Doubt, sir. No doubt. No doubt, sir. Okay. अब इसके लिए तो easy है. You have the answer of this one. Inverse 90. Laplace transform. Yes, inverse Laplace transform apply करेंगे तो इसका तो आपको पता है. What is it? Sin t. Yes, sin t. Very good. लेकिन what about this one?
इसके लिए क्या करेंगे? एनी आइडिया? इनवर्स लाप्लास. ओके, apply inverse Laplace transform. Both sides. Okay. Laplace inverse of e raised to minus s upon s square plus 1. Laplace inverse of 1 upon s square plus 1. Okay. So this is your next step. Okay. Now tell me what is this? कोई बताएगा मुझे कि इसका इनवर्स लाप्लास कैसे मिलेगा? So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज बिकॉज करके. देखो यहाँ पे हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम किया था, लेकिन सारे एग्जांपल लाप्लास के लिए ही किया था. लेकिन व्हाट अबाउट लाप्लास इनवर्स? देखो यहाँ पे देयर इज ए थ्योरम इन लाप्लास इनवर्स. क्या था? लाप्लास इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस as अपॉन fs. तो हमारे केस में क्या हुआ? लाप्लास इनवर्स ऑफ e रेज़ टू क्या था हमारे केस में? माइनस 3s अपॉन यस s स्क्वायर प्लस 1. चलो तो यहाँ पे पहले यहाँ से आप देख लो, फिर वहाँ पे ही लिखता हूँ ताकि आपको सीधा वहाँ पे दिखा पाऊँ. लुक एट दिस. लाप्लास इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस as इनटू fs इज इक्वल टू व्हाट इज f ऑफ t माइनस a इनटू ut माइनस a. देख लिया ये सबने? एवरीबॉडी? यस सर. ओके. सो यहाँ पे वही स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ. तो थोड़ा देखना आप यहाँ पे. बाय सेकंड शिफ्टिंग oh sorry, not this is the not exact shifting. Okay, second shifting theorem. What we have? Laplace inverse of क्या था? e raised to minus as था ना? as या माइनस था? माइनस as. माइनस as into fs. ओके, इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a into ut माइनस a. यस और नो? यही था कि नहीं? यस सर. Yes, sir. नाउ रिप्लेस आवर थिंग्स हियर. ओके, हम यहाँ पे हमारी थिंग्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ मेरे में e रेज़ टू माइनस 3s और fs की जगह पे 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो व्हाट इज द 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा? साइन टी. Sin t. ओके, तो साइन यहाँ पे मुझे t माइनस a करने के लिए बोला है उन्होंने. सो t माइनस 1. यस, नो नो नो, नॉट अ माइनस 1. a की जगह पे यहाँ पे कंपेयर करो. a की जगह पे कौन बैठा है? 3 प्लस 3. या ना, प्लस 3. सो t माइनस 3 u t माइनस 3. दैट इज माय आंसर ऑफ द फर्स्ट इनवर्स लाप्लास. इज इट ओके एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड या कोई डाउट है? नो डाउट सर. ओके, सो दिस इज द सेकंड शिफ्टिंग. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देयरफॉर दिस इज योर y ऑफ t. ओके, y ऑफ t इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया ये sin t माइनस 3 इंटू यू टी माइनस 3 प्लस दिस इज योर sin t. सो sin t विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Which is required solution. So is there any doubt, any confusion in this example? Anybody? यहाँ पे नहीं है ना? No doubt. Online में no doubt? नो डाउट सर. No doubt, sir. Okay. So this is our last example of the unit, and these are the practice work example I will share with you. Try for this. Okay. And I think I will already share the PDF of this unit also. है ना? तो उसमें भी practice work में है. मैंने भेज दिया है ना ये?
full unit PDF, full unit No, PDF, sir. है ना? फुल यूनिट PDF तो भेज दिया है बेटा, नहीं मिला Yes. है ना? यस, वो तो आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर के बाद ही भेज दिया था, है ना कुछ, Yes, sir. है ना? ओके, I will share this PPT also, so don't worry about it. Okay, now is there any doubt, any question in this unit? Anybody? No doubt, sir. Okay, now I go